ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की इस वीडियो में कुछ शानदार टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। एंड वो दैट टॉपिक आल्सो बिलोंग करेगा वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ओके, ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर की जो पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो आज हम पार्ट 3, आई थिंक पार्ट 3 या 4 हो सकता है, आई थिंक 4 आज बात करेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्राइम्स दैट गाइड अस। जो प्राइम होते हैं ना, आइडियाज आते हैं, वो उनके बारे में, वो हमें कैसे गाइड करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इसे रीडिंग करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि यस्टरडे के बारे में। यस्टरडे जो मैं क्या चीज़ के ऊपर मैं रीडिंग किया था, जो यस्टरडे की जो टॉपिक थी हमारी, जो द मार्वल्स ऑफ प्राइमिंग। जो मार्वल्स ऑफ प्राइमिंग का मतलब होता है, जब हम किसी वर्ड को सुनते हैं उसी वक्त उसी की चीज़ हमारी पिक्चर में कैप्चर हो जाती है एंड उसी के रिलेटेड कुछ भी हमें याद आ जाता है। एंड अगर उसी हिसाब का अगर हमारे दिमाग में अगर आइडियाज़ भी नहीं होंगे, अगर उसी हिसाब से हम अगर एक्ट भी करते हैं, तो उसी टाइप का जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली काम करते रहते हैं और काम में चालू प्रोसेस रहते हैं। ओके, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है अबाउट टॉपिक द प्राइम्स दैट गाइड अस। तो मैं ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड आज बहुत देर से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मन नहीं था आज, लेकिन रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, the studies of framing effects have yielded discoveries that threaten our self-image and conscious and autonomous authors of our judgments and our choices. For instance, most of us think of voting as a deliberate act that reflects our values and the assessments of the policies, and is not influenced by irrelevancies, and our vote should not be affected by the location of the polling station, for example. But it is a study of voting patterns in precinct of Arizona in 2000 showed that the support for proposition is increased. The funding of schools was significantly greater when polling station was in a school than when it was in a nearby location. A separate experiment showed that exposing people to images of classrooms and school lockers also increased the tendency of participants to support a school initiatives. The effect of image was larger than the difference between parents and the other voters. The study of rhyming has become some way from the initial demonstration that reminding people of old age makes them walk more slowly. We now know that the effects of priming can reach into every corner of our lives. Reminders of money produce some troubling effects. Participants in one experiment were shown a list of 5 words from which they were required to construct a 4-word phrase that had a money theme. High a salary desk pay become a high paying salary. Other primes were much more subtle, including the presence of an irrelevant money-related object in the background, such as the stack of monopoly money on a table or a computer with a screensaver of dollar bills floating in water. Money primed people become more independent than they would be without the associative trigger. They preserved almost twice as long in trying to solve a very difficult problem before they asked the experimenter for help. A crispy demonstration of increased self reliance. Money primed people are also more selfish. They were much less willing to spend time helping another student who pretended to the to be confused about the experimental task. When an experimenter clumsily dropped a bunch of pencil on the floor, the participant with money unconsciously on their mind picked off pure pencil. In the another experiment in the series, participants were told that they would shortly have a got acquainted conversation with another person, and
were asked to set up two chairs while the experimenter left to retrieve that person. Participant primed by money choose to stay much further apart than their non-primed peers. 118 versus 80 centimeters. Money primed undergraduates also showed a greater preference for being alone. The general theme of these findings is that the idea of money primes individualism, a reluctance to be involved with others, to depend on others, and accept demands from others. The psychologist who has done this remarkable research, Kathleen Bose, has been laudably restrained in discussing the implication of her findings, leaving the task to her readers. Her experiments are profound. Her findings suggest that living in a culture that surrounds us with reminders of money may shape our behavior and our attitudes in ways that we do not know about and of which we may not be found proud. Some cultures provide frequent reminders of respect, others constantly remind their members of God, and some societies prime obedient by large images of their leader. Can there be any doubt that the Iquitos portraits of the national leader in dictatorial society not only convey the feeling that Big Brother is watching, but also lead to a actual reduction in spontaneous thought and independent action. The evidence of framing studies suggests that reminding people of their mortality increases the appeal of authoritarian ideas, which may become reassuring in the context of the terror of death. Other experiments have confirmed Freudian insights about the role of symbols and metaphors in unconscious associations. For example, consider the ambitious word fragments W Dias Dias, filling the blanks, and Dias Dias P. People who were recently asked to think of an action of which they are ashamed are more likely to complete those fragments as was and soap, and less likely to see wish and soup. Furthermore, merely thinking about stabbing a co-worker in the back leaves people more inclined to buy soap, disinfectant or detergent than batteries, juice and candy bars. Feeling that one's soul is stained appears to trigger a desire to cleanse one's body, an impulse that has been dubbed the Lady Macbeth effect. The cleansing is highly specific to the body parts involved in a scene. Participants in an experiment were induced to lie to an imaginary person, either on the phone or in email, in a subsequent test of the desirability of various products. People who had lied on the phone referred mouthwash over soap, and those who had lied in email referred soap to mouthwash. When I was describing framing stories to audiences, the reaction is often disbelief. This is not a surprise. System 2 believes that it is in charge and that is knows the reasons for its choices. Questions are probably cropping off in your mind as well. How is it possible for such tribal manipulations of the context to have such large effects? Do these experiments demonstrate that we are completely at the mercy of whatever frames the environment provides at any moment? Of course not. The effects of the primes are robust, but not necessarily large. Among 100 voters, only a few whose initial preferences were uncertain
will vote differently about a school issue if their precinct is located in a school rather than in a church. But a few percent could give an election. The idea you should focus on, however, is that disbelief is not an option. The results are not made of, nor are they statistically blocks. You have no choice but to accept that the major conclusions of these studies are true. More important, you must accept that they are true about you. If you had been exposed to a screensaver of floating dollars bills, you too would likely have picked up your pencil to help a clumsy stranger. You do not believe that these results apply to you because they correspond to nothing in your subjective experience. But your subjective experience consists largely of story that your system too tells itself about what is going on. Priming phenomena arise in system 1 and you have no conscious access to them. I conclude with a perfect demonstration of a priming effect with watch which was conducted in an office kitchen at a British university. For many years, members of that office had paid for the tea or coffee to which they helped themselves during the day by day, dropping money into an honesty box. A list of suggested prices was posted. One day, a banner poster was displayed just above the price list with no warning of explanation. For a period of 10 weeks, a new image was presented each week, either flowers of or eyes that appeared to be looking directly at the observer. No one commented on new decoration, but the contributions to the honesty box changed significantly. The posters and the amount of that people put into the cash box relative to the amount they consumed are shown. The figure deserve the close look. Okay, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है. ओके, साइड में आइस एंड फ्लावर्स की दी है एंड इस साइड में जो उनकी जो वीक्स पिक्चर्स दी है. जो पहली वीक में आँखों को ज़्यादा देखा गया है एंड दूसरी में फूलों को, तीसरी में आँखों को, चौथी पे फूलों को, पांचवी में आँखों को और सिक्स्थ में फूलों को, सेवेंथ में आँखों को, एट्थ में फूलों को और नाइन्थ में आँखों को और टेंथ में फूलों को. Okay. On the first week, the experiment which you can see that bottom of the figure, two wide open eyes stare at the coffee or tea drinkers, whose average contribution was 70 pence per liter for milk. On week 2, the poster shows flowers and average contributions drop to about 15 pence. The trend continues. On average, the user of kitchen contributed almost 3 times as much in eye weeks as they did in flower weeks, evidently a purely symbolic reminder of being watched, prodded people into improved behavior as we expect at this point. The effect occurs without any awareness. Do you now believe that you would also fall into the same pattern? Some years ago, the psychologist Timothy Wilson wrote a book with the evocative title Strangers to Ourselves. You have now been introduced to that stranger in you, which may be in control of most of what you do, although you rarely have a glimpse of it. System 1 provides the impression that often turn into your beliefs, and each the source of impulses that often become your choices and your actions. It offers a tacit interpretation of what happens to you and around you.
Linking the present with the recent past and with the expectation about the near future, it contains the model of the world that instantly evaluates events as normal or surprisingly, it is the source of your rapid and often precise intuitive judgments. And it does not most of this without your conscious awareness of its activities. System 1 is also, as we will see in the following chapters, the origin of many of the systematic errors in your intuitions. Okay, speaking priming. The slight of all these people in uniforms does not prime a creativity. ओके अगर आप जैसे ड्रेस पहनते हो उसी हिसाब से आप एक्ट करोगे ये कोई मायने नहीं रखता अगर आप बहुत प्राइम मतलब रीच का जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है बट आपका बिहेवियर रीच का जैसा नहीं है तो ये कोई वैल्यू नहीं रही the world makes much less sense than you think. The coherence comes mostly from the way your mind works. ओके कोहेरेंस आता है तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करती है उसी हिसाब से एंड दे वेर प्राइम्ड टू फाइंड फ्लॉज एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे फाउंड एंड हिज सिस्टम 1 constructed a story and system 2 believed it. It happens to all of us. ओके सिस्टम 1 एक स्टोरी बनाती है एंड सिस्टम 2 उसे बिलीव करती है ये हमें सबके साथ होता है ओके एंड आई मेड माई सेल्फ स्माइल एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर अगर मैं अपने आप को स्माइलिंग हंसना शुरू कर देता हूँ तो किस ऐसे ओके बिना कुछ करे कि आप स्माइल करें तो अपने आप को बेटर फील कर सकते कराते हो बाय द स्माइलिंग बाय योर सेल्फ ओके आज के लिए इतना ही एंड बहुत रात हो चुकी है लगभग 11-12 बजने वाले हैं रात के एंड मुझे पढ़ने का भी मन नहीं था लेकिन मैंने कंप्लीट कर दिया एंड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना अपना एंड जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि क्यों आज इतना लेट हुआ बिकॉज आज सुबह मेरा एग्ज़ाम था 8 से 9 तक एंड आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन के लास्ट 6 सेम की लास्ट एग्ज़ाम थी तो एथिक्स एंड वैल्यूज थी एंड उसे 1 घंटे का था एंड ख़त्म होने के बाद आते ही हम रेडी हुए तरह बीच घूमने के लिए तो घूम के आने तक मुझे लग गया 8 बला रात को 8 बज गया एंड आने के बाद थोड़ा मैंने खाना खा लिया उसके बाद बहुत थकान बहुत हुई तो थोड़ी सी बैठा एंड थोड़ा इधर उधर हुआ एंड उसने होने के बाद कुछ वो एग्ज़ाम दिया था ना उसका थोड़ा रिजल्ट आया था तो मैंने थोड़ा चेक कर रहा था क्या क्या सही है या गलत एंड देखा तो भाई कुछ में मेरा आया ही नहीं तो ठीक है देखते हैं नेक्स्ट में आई विल बी डू गिव माई बेस्ट एंड उसके बाद मैंने सोने जा रहा था लेकिन जाने से पहले मुझे याद आया कि आज मुझे रीडिंग नहीं किया हूँ मैंने तो रीडिंग नहीं किया हूँ तो कैसे सो सकता हूँ तो रीडिंग तो करना पड़ेगा तो मन नहीं था आज रीडिंग करने का लेकिन रीडिंग ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सबको एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को जिन्होंने इतना बेहतरीन दिन दिया आज के एंड ये तो काल से बहुत बेहतरीन था ओके एंड मेरे माता जी मेरे पिताजी एंड सबको मेरा धन्यवाद एंड जो मेरे ज़िंदगी में आने वाले हैं जो ज़िंदगी से चले गए हैं और मेरे जो अराउंड सर्कल में है एंड जो जाएंगे उन सभी को मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू एंड जितने भी मेरे इस धरती पे जो लिविंग नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं सबको मेरा थैंक यू एंड जितना भी चीज़ें मेरे लाइफ में है ये सारे चीज़ों के लिए मैं कृष्णा को फिर से थैंक यू करना चाहूँगा थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग सच ए नाइस लाइफ टू मी एंड काल का दिन था बहुत ही बेहतरीन था एंड जो आज जो खाना दिया जो भी दिया आज सब कुछ सबके लिए हंसी दी खुशी दी सबके लिए थैंक यू एंड इतना ही एंड जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड बी क्यूरियस एंड ऑलवेज बी फुल एंड फूल लेकर रहना बट स्टे फुल स्टे हंग्री मतलब फूल लेकर रहना बट ऑलवेज फॉर बी सीकिंग कुछ सीखने को ऑलवेज भी तैयार रहना एक्टिव ओके इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग